we were discussing the law of inheritance and the variations under genetics and evolution. हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के संबंध में अध्ययन कर रहे थे और उसमें वी आर स्टार्टिंग सम टर्म्स जो ऐसे शब्द जिनका उपयोग इसमें होता है उसके संबंध में वी हैव स्टडीड इन द लास्ट एपिसोड्स. नाउ द सम टर्म्स आल्सो एंड दैट इज नोन एज inheritance. What do you mean by inheritance? Inheritance means transfer, is a process. Inheritance is a process by which characters are transferred from the parents to their progenies. यानी इनहेरिटेंस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिससे माता पिता के कैरेक्टर्स उनके संतानों में जाता है यानी ट्रांसफर होता है. दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस. समझे? नेक्स्ट वन, वेरिएशंस. वेरिएशंस मीन्स डिफरेंशिएशन, भिन्नता. मीन्स हाउ द ऑफस्प्रिंग्स आर डिफर्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स. एक चीज देखोगे कि सभी तो जीव एक ही जो इनके संतान होते हैं वह देखने में तो एक ही जैसे होते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स जो है उनके फीचर्स बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है. तो वही जो है डिफरेंशिएशन यानी माता पिता उनके संतानों में जो डिफरेंशिएशन पाया जाता है, जो भिन्नता पाई जाती है, मीन्स वी आल्सो सो दैट इज degree of differentiation, degree of differentiation समझे between parents and their offsprings. यानी उनमें जो क्या कहता है डिफरेंशिएशन पाया जाता है उसी को हम लोग क्या करते हैं वेरिएशन के नाम से जानते हैं. नाउ हेरिडिटी, ये जो है बहुत ही नामी शब्द है, समझे? इसको हमेशा यू हैव टू स्टडी. हेरिडिटी इज ऑल्सो ए, समझे, मीन्स transmission of characters from the parents to offspring. Means it is the transfer of characters from parents to offspring. Transmission of characters. Characters means actually genetic characters from the parents to offspring is called heredity. Actually, both looks alike, but it's a phenomenon and it is a process. And it is a path by which it transfer, and this is the phenomenon. Difference between that. दोनों एक ही जैसे होते हैं लेकिन ये का एक फेनोमेनन है, घटना है, और ये का एक पथ है, प्रोसेस है, विधि है. Now, one thing, heredity is also called vertical transmission. And another name is also called, but heredity is also called ant.
particular. One thing, this unit of heredity is gene. Unit of heredity is gene. You have studied and about gene and about study of gene and inheritance, variations, heredity, all about all this. These are comes under genetics. और हेरिडिटी क्या है, इसकी यूनिट जीन होती है और जीन और इन सबों के अध्ययन को हम लोग जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो हम सब अब इन सबों का अध्ययन किया जाएगा। और एक चीज है कि ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, समझे, इनहेरिटेंस, वेरिएशंस और हेरिडिटी। नाउ वी सी द हाउ द heredity, variations and inheritance they all are related to each other. We can say that pattern of heredity is the essence of inheritance. Pattern of heredity is the essence of inheritance. Essence of a pattern of heredity is the essence of inheritance, and variation is the essence of हेरिडिटी। यानी एक करने की आवश्यकताएं हैं ये सब। सो पैटर्न, वी कैन से पैटर्न इज द हेरिडिटी, पैटर्न ऑफ हेरिडिटी इज द एसेंस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज द एसेंस ऑफ हेरिडिटी। यानी इनहेरिटेंस की आवश्यकता ये है और इसकी आवश्यकता ये है, समझे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि तीनों एक दूसरे से संबंधित है। नाउ वी कम टू बेस्ड ऑन मेंडल्स Mendelism. We know that its name was G.J. Mendel, 2 to 1884. He was a priest and mathematician. But he was interested in gardening, so he worked on pea plant in the year 1956, and it has continued to 6 or 7 years. And in the 1965 he published his work, but at that time the biologists did not noticed on that. चूंकि मैंने पहले ही बता चुका हूं पहले ही कि इन्होंने अपना जो वर्क किया था 6-7 सालों में, उसका एक पब्लिकेशन जब इन्होंने दिया, समझे, तो उस वक्त के वैज्ञानिक, उस वक्त के बायोलॉजिस्ट जो थे, इनके कामों पे ध्यान नहीं दिया। पहले तो ये चूंकि एक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने कुछ ऐसे सब फैक्टर्स का उपयोग किया था जो उस वक्त समझ में नहीं आया था हमें। लेकिन 1900 में समझे, इन द ईयर 1900 हिज वर्क्स वाज रिवाइज्ड बाय मेनली ह्यूगो de Vries, Shermark and Collins, by these 3 scientists. इन तीनों ने हमने
इनके काम को रिवाइज किया और जब इसकी इंपॉर्टेंस सामने आई, समझे। एंड नाउ वी शैल सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ही एक्चुअली वर्कड ऑन पाइजम सेटिवम। इन्होंने पाइजम सेटिवम पे काम किया, दैट इज नोन एज पी। अब ये क्या, व्हाई ही यूज द या व्हाई ही चॉइस द पाइजम सेटिवम, एक सवाल उठता है क्या कि उन्होंने पाइजम सेटिवम को ही क्यों चुना, समझे। फर्स्ट, इट इज अ शॉर्ट लाइफ प्लांट, ये इट इज एन एनुअल प्लांट एंड इट इज अ शॉर्ट लाइफ प्लांट, यानी इसकी जीवन बहुत कम होती है। सेकंड, it performs both self and cross pollination। इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों था। नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन था, लेकिन वी कैन डू ऑल्सो क्रॉस पॉलिनेशन। नेचुरली इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और फ्लावर बाइसेक्सुअल फूल होते हैं। इसमें बहुत से कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें बहुत से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का किया, और ये सबसे मेन बात, इट इज इजी टू ग्रो, और इसकी खेती भी, इसे उगाने में भी बहुत आसानी होता है। तो इन सब खूबियों की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सच कैरेक्टर्स, ही यूज द पाइजम सेटिवम। मेंडल स्टडीज द contrasting characters of the pea, and he took the 7 contrasting characters, 7 contrasting characters, and one thing, 7 contrasting मैंने ऑपोजिट कैरेक्टर्स उन्होंने लिया था। एक उसमें एक डोमिनेंट फिल किया और एक को रिसेसिव। दिस इज द डोमिनेंट एंड दिस इज द रिसेसिव। जैसे सीड शेप राउंड और रिंकल्ड, ये राउंड डोमिनेंट हुआ, रिंकल्ड रिसेसिव हुआ। सीड कलर येलो और ग्रीन, जिसमें ये सब डोमिनेंट्स हैं और वो रिसेसिव है। फ्लावर्स कलर वायलेट एंड व्हाइट। फ्लावर पोजिशन एक्सियल एंड टर्मिनल, समझे। Flower position axial and terminal, pod shape inflated and constricted, pod color green and yellow, and stem height tall and dwarf। ये 7 contrasting characters को उन्होंने चॉइस किया, हमने। और एक हिसाब से एक चीज है, वो मेंटलिज्म जो है, he was a lucky, he is said to be a lucky because in his process no link gene was found। if the link gene was found, the results may be differ। क्योंकि वो भाग्यशाली थे कि उनमें कोई भी लिंक जीन उपस्थित नहीं था। अगर लिंक जीन होता तो उन्होंने जो डाटा दिया था उसमें भिन्नता पाई जाती थी। तो इस हिसाब से उन्हें एक भाग्यशाली ये साइंटिस्ट भी कहा जाता है। नाउ आफ्टर स्टार्टिंग डेज ही गेव हिज लॉज, then laws of, that is called laws of इनहेरिटेंस। उन्हें हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं, या इट इज ऑल्सो नोन एज मेंडल्स लॉ। इसे मेंडल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं हमने। एक्चुअली ये लॉज जो है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दैट इज law of dominant, law of segregation, and law of
independent assortments. So here there are three laws. According to your NCERT, it is given that law of dominant, law of segregation, and law of independent assortment. But one law we also study before going to this, that is known as law of unit character. तो इन तीनों अध्ययन करने से पहले एक और लॉ हम अध्ययन कर लेते हैं, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर. सो इस तरह से ये वी शैल स्टडी ऑन दिस वन बाय वन. नाउ फर्स्ट नियम, फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ यूनिट character. This law states that every organism has its own character, which is independent to others. Means it does not depend on the others. It is totally independent, and the factors are responsible for these characters. And second, factors are found in पेयर. और ये जो फैक्टर्स होते हैं हमेशा युग्म के जैसे पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एलिलीज. और ये क्या होता है, एलिलीज के रूप में पाया जाता है. ये हमेशा क्या होता है, वन थिंग मस्ट दैट इज फाउंड इन पेयर. दैट्स एज फॉर एग्जांपल फॉर द टॉलनेस tt has two characters. For the tt, so they are found, they are their own characters which is independent to others. I mean, and that such character is called law of unit character. ऐसे characters जो इन दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं बल्कि स्वतः उनके होते हैं, समझे. और ये कंट्रोल बाय फैक्टर्स एंड इट इज नाउ नोन एज जीन्स. And they are found in pair in the form of allele. Allele के शक्ल में ये पाया जाता है. This is the first law. Now, according to Mendel's law of dominance. Law of dominance means what means the law of dominance, and what is dominance? When law of dominance, when the parents of contrasted characters are crossed, the character which is expressed in the next generation by
depressing the other character is said to be dominant. जब दो कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स समझे आप क्रॉस किए जाते हैं तो वह कैरेक्टर जो नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस्ड होगा, नेक्स्ट जनरेशन में वह जो एक्सप्रेस होगा, स्पष्ट होगा, दूसरे को दबा के, यानी जो सामने दिखेगा, जो फेनोटिपिकली होगा, समझे, तो दैट इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर्स, समझे। और जो नहीं दिखेगा दैट इज कॉल्ड रिसेसिव। एज फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ वन इज TT, that is tall, crossed into TT, small. We cross it, TT and TT, both are tall. So, tallness is the law of dominance हो जाए when जब दो कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर्स वाले माता पिता क्रॉस किया जाता है तो जो संतान, जो कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस्ड होगा उसको हम डोमिनेंट कहेंगे। जैसे टॉल और डॉर्फ को लें तो F1 जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में और क्या होगा, टॉल होगा। तो टॉल इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, समझे। इसलिए कि टॉल जो है नेक्स्ट जनरेशन में स्पष्ट होता है और ये शॉर्ट या डॉर्फ स्पष्ट नहीं होता है, समझे। तो इसको हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर्स कहते हैं और इस लॉ को लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट लॉ विल बी डिस्कस्ड इन द कमिंग वीडियो।